नागरिकता संशोधन आईन विरोध में देश में चली विरोध प्रदर्शन और हिंसाकांड उपरे मुह खोलिले सेना मुख्य जनरल बिपिन रावत। कौन विश्वविद्यालय ना न नहीं विरोध प्रदर्शन उपरे से प्रश्न उठाई। दिल्लीर एक कार्यक्रम में जोगदे जनरल बिपिन रावत कहते नेता से कहना जो मैंने हिंसाकांड घटाऊा लोकों नेतृत्व नहीं था। छात्र विश्वविद्यालय बाहरी हिंसाकांड घटाऊँ नेतृत्व नेबार क्षमता ताकू कहना जी लोकों भूल रास्तार नियंती। बहु संख्यार विश्वविद्यालय और कॉलेज छात्र विरोध प्रदर्शन सह हिंसाकांड लोकों उस्काइबा भली कामर नेतृत्व करुछंती। काम को तीव्र निंदा करिसेंती सेना मुख्य। नागरिकता आईन विरोध में एवं देशर विभिन्न स्थान में विरोध प्रदर्शन चली। विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज छात्र छात्री यहां विरोध कर राजरास्ता को ओह्लाउछंती। एभली स्थिति में सेना मुख्यों एभली प्रतिक्रिया को नहीं आरंभ होइछि चर्चा। Leadership is all about leading. Therefore, what is so complex about leadership? If it is all about leading. Because when you move forward, everybody follows. It is not that simple. It appears simple, but it's a very complex phenomena. Even amongst a crowd you find leaders emerge. But leaders are those who lead people in the right direction. Leaders are not those who lead people in inappropriate directions, as we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. A leader is one person. साधारणतः आम देश में देखू कि सेना मुख्य बा सेना दायित्व में जो अधिकारी माने थांती से माने देशर आभ्यंतरीण कथार मुंड खेलांती नाही बा से भली किछि बयानबाजी करती नाही। किंतु वर्तमान सीए प्रसंग और छात्र आंदोलन प्रसंग में जितेबाला सेना मुख्य यह एक बयान देइचंती ताकू नहीं चर्चा आरंभ हो जाइछि। एवं एही प्रसंग में विस्तृत भाव में आलोचना करबा आम सहित जोड़ुछंती मेजर जनरल सोमेन्द्र देव महांती। मेजर जनरल महांती आपनकु स्वागत करुछि। सेना मुख्यंकर ई बयान बा ई प्रतिक्रिया को प्रथमे आपन किभली देखंती प्राथमिक भाव में आपनकर दृष्टिभंगी कोन प्रतिक्रिया कोन जानिबा पई चाहिबी? मो दुई दृष्टि देखुची जो दृष्टि भी देखुची से दृष्टि मु भावुची एटा गोटे अनुचित थिला। एटा तांकर गोटे सेना मुख्य हिसाब रे कारण ए जो प्रसंग रे से कहले दैट प्रसंग हैज ऑलरेडी बिकम पॉलिटिसाइज्ड. It is no more confined to the universities and it is not more prompting from the other political parties. So therefore, it is quasi, or shall we say, it is heavily loaded with political content. Now, therefore, as a serving soldier, it is totally unwarranted that any kind of comment should be made. General leadership is different, but that can be. There are two things. What he is hinting at: leaders are there in every walk of life. So. One is internal within the armed forces and the other is external. In the external, essentially the leadership is, the highest level of leadership is political leadership. And so therefore, eita ko tankara sei drushti re dekhibi tale mo matare this is not correct. And jodi kebal sena bahini ro prasang re dekhibi mo bhabuchi eta completely unwarranted, anuchit. So it is time, unfortunately, I cannot understand what was the compulsion confila so we said the less the military addresses in such matters the country as a whole, we must not do that. We should continue ourselves in our professional field, and unfortunately there has been a tendency, or perhaps growing tendency, as an old veteran, years, decades senior to this present generation of leadership, military leadership, I feel that it is incorrect. मेजर जनरल सोमेन्द्र देव महांती से प्रकृत में क्यों कार्यक्रम रे कथा कहते तो स्पष्ट होना जदि परवर्ती समय अपडेट आसे आम निश्चय जनइबू कि क्यों कार्यक्रम रे क्यों परिप्रेक्षी से कथा कहते किंतु प्रकृत में से जो कथा कहते नेतृत्व नेबार अधिकार बा लीडरशिप
को भली व्यक्तित्व नेबा उचित जे माने हिंसा को उस्कौचंती जे माने गोटे विभाजन सृष्टि करबा पई चेष्टा करूचंती सेमानक हाथ रे नेतृत्व रहिबा केते दूर ठीक एवं सेमानकु नेता कुहा जीवो की एवं प्रकृत रे आपण कोन बुझंती गोटे नेतार संज्ञा कोन हेबा दरकार आया नेतार केवल गोटिए संज्ञा सेटा होची लीड थ्रू एग्जांपल एग्जांपल जहाँ भी कहवा को चाहती इट इज ऑफ नो यूज जिते भी प्रवचन करने को चाहती एटार कौन सी माने नहीं इफ इट इज नॉट लेड विथ एग्जांपल so tenukari that is the only prasanga and unfortunately fortunately the Indian armed forces by nature has kept away from any kind of political statements, political indulgences, involvements, and there have been attempts, but we must not even say something which should look political. And whatever it may be, that is a fundamental difference between the good military leadership and unfortunate military leadership like our neighbor in Pakistan it is, where not only have they interfered heavily in political matters, but also in business and so on and so forth. And simply, I mean, we must, there are many temptations, there utskanti but we must keep away, and the others can, but I mean, mo matare sena bahini jete public involvement and in indulgences was better, and that is why we have always remained a highly professional one, better than most professional armies, only because we have remained apolitical. And and that is exactly why that I think is the biggest contribution towards our winning wars after wars, whenever our adversary or amaro शत्रु माने आम पर आक्रमण करिसंती वी हैव आमे सब बेले एई निष्ठाता को बजै रखिछु आ वर्तमान जदि कोनसी प्रकार तार गोटे एनी काइंड ऑफ कोन कोनती attraction or this then it is unfortunate, and I'm sure there will time will come, it will be corrected. मेजर जनरल एसडी महंती आ गोटे कथा कहबी आमे जानि कि सेनार जे माने अधिकारी बा जे माने दायित्व रे थांती से माने देशर आभ्यंतरीण व्यापार विषय कोनोसी प्रकार प्रतिक्रिया दियंती नाही जदि किए देई दिए ताहेले सेना पाखरे रास्ता कोन सेना पदक्षेप कोन नै पारिबो एवं एहा पई आईनगत दिगो कोन आज्ञा शुणु गोटे कथा कहबी फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोएस्ट द रियल एग्जीक्यूटिव और द कॉम्बैट और द फाइटिंग लेवल इन आमर सेना रे प्रत्येक वायुसेना हो नौसेना हो किंबा सेना बाहिनी हो स्थल सेना हो दैट इज रियली आवर डिविजन्स आवर ब्रिगेड्स एंड आवर यूनिट्स एंड बटालियंस से लेवल को आसे नहीं दे आर सो प्रोफेशनल एट दीज लेवल्स दैट एपरी कौन सी स्टेटमेंट कौन सी जदि थाए इट डजंट अफेक्ट देम we are too engrossed in our professional approach to war fighting, so therefore it amku sete kare nahi, so but it is still chhata to achi, that is our principles and our war fighting missions and our passion for fighting when it's forced on us and so on. But यहाँ वर्षा हेले छता थिले मध्ये भी पानी छिटा पड़े तो टिके छिटा पड़े, but don't it will not going to affect. We are a huge army, we are extremely professional, so at the cutting edge it is not going to make any effect at all, any adverse effect. आज्ञा एवं एहा कोनी कोनोसी विवाद बढ़िबोनी आपण एई आशा करूचंती न सेना भीतर तो प्रश्न उठुनी हम हसी दो आज्ञा निश्चय बहुत धन्यवाद। हां बहुत धन्यवाद मेजर जनरल सोमेंद्र देव महांती आपनक ई प्रसंग रे प्रतिक्रिया पाई।